Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. Today I have something very special for all of you. मैंने आपके लिए चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, की पॉइंट्स और ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट जो कि इस चैप्टर में इन्वॉल्व हो रहा है वो कंपाइल करके ये वीडियो क्रिएट की है. I have created topper notes or you can say cheat notes that you can revise just before your math exam. This is true that math is all about practice. लेकिन apply करने से पहले you need to learn the formulas and important concepts. These topper notes I have included all the key formulas for the chapter, important points that summarize each concept, and diagrams, examples to illustrate these concepts. This will make it easy for you to quickly review everything you need to know just before your exam. Let's start our presentation without any delay. Let's suppose we have 2 points A and B. A point is x1, y1 and B point is x2, y2. And we have to find distance between these 2 points. Then we are going to use distance formula. And the distance formula is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square whole under root. डिस्टेंस फॉर्मूला को हम डिस्टेंस ऑफ ए बी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और यू कैन राइट जस्ट टू अल्फाबेट्स टुगेदर. जिनका आपने डिस्टेंस फाइंड करना है जस्ट राइट देम टुगेदर लाइक ए बी इज इक्वल्स टू द फॉर्मूला. देन मिड पॉइंट फॉर्मूला. मिड पॉइंट फॉर्मूला में आप लोगों ने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. एक्स कोऑर्डिनेट में व्हाट यू डू सिंपली यू ऐड एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड हाफ देम. x1 plus x2 divided by 2. Likewise, when you have to find y coordinates, simply you add y coordinates y1 plus y2 divided by 2. So ये two formulas हैं जो आपके इस chapter में use हो रहे हैं. When are we going to apply distance formula? Let's suppose there is a question in which they're asking you the type of triangle. What is given? 3 vertices would be given in that question, A, B and C, and you have to tell the type of triangle. Simply you are going to find distance of AB, distance of BC and distance of AC. Then you're going to compare. If all 3 lengths are same, it means that the type of triangle is equilateral triangle. If 2 sides are same, then triangle would be isosceles triangle. And if no side would be same, then the triangle would be scalene triangle. So what are you going to do? Simply you're going to find distance of AB, BC and AC. If 3 points are given and you have to prove that whether this triangle is right angle triangle or not, then what are you going to do? Simply you are going to use Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem? It's hypotenuse square is equals to base square plus perpendicular square. You are going to do same thing. आपने तीनों का डिस्टेंस फाइंड करना है. AB, BC और AC का डिस्टेंस फाइंड करना है. After finding distance, you will pick up the largest length because hypotenuse is the largest length. So hypotenuse square is equal to base square plus perpendicular square. So if this formula is satisfied, it means that the triangle is a right angle triangle. So simply we will use distance formula when we have to tell type of triangle or when we have to prove that the triangle is right angle triangle. Let's suppose in a question they are saying that prove that whether these 4 vertices they form a square or not. Then what are you going to do? You will find the distance of all these points. Like if you have A, B, C and D, simply you will find AB distance, BC distance, CD distance and DA distance. If all 4 lengths are equal, then it means that it is a square. और उसके बाद you have to use Pythagoras theorem to show that angle is of 90 degree. You are going to find diagonal length और diagonal length find करने के बाद, like if I draw a square over here, you have to find this diagonal length and then you have to prove that whether this triangle is a right angle triangle or not. In next condition, let's suppose you have to prove that whether it is a rectangle or not. So what are you going to do? Simply you are going to find distance of AB, BC, CD and AD and then you're going to compare. If opposite sides are equal, it means that the shape is a rectangle. But for proving rectangle, you have to show another thing also, that angle should be of 90 degree. So same we are going to do like this. We are going to find diagonal length and you have to use Pythagoras theorem to prove that the triangle is right angle triangle. Then if you have to prove parallelogram, it's same. In parallelogram, opposite sides would be same, but right angle triangle would not be proved. Note one more thing, that square is also a kind of rectangle, because what is condition of rectangle? That its opposite sides are same, and same goes with square, because in square opposite sides are same. That's why square is also a type of rectangle. Collinear.
If points lie on the same line, it means that the points are collinear. Let's suppose if we take example of A, B and C. They lie on same line. It means that A, B and C are collinear. And generally if we write its formula, it means that AB plus BC is equal to AC. If I give you an example, let's suppose AB is 2, BC is 7. So altogether AC would be 9. So we can write that 9 is equal to 2 plus 7. So generally we can write that AB plus BC is equal to AC. So how we are going to prove this in our questions? हमें इसको इस तरह से प्रूव करना है कि लेट्स सपोज कि आपके पास 3 पॉइंट्स गिवन है, आपने इन तीनों पॉइंट्स पे डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है. आफ्टर अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला यू हैव टू पिक अप द largest one. Largest one should be equal to sum of the other two lengths. So I've written sum of two lengths is equal to third largest length. And when we talk about non-collinear, it means that points do not lie on the same line. And this we can prove by using same formula. You will find distance of all 3 points, and then you will pick up the largest one, and you have to prove that largest is not equal to the sum of other two lengths. It means that the points are non-collinear, and the example of non-collinear is vertices of triangle or quadrilateral, etc. There are not many examples: pentagon, hexagon, or many other 2D shapes. If you have to prove that whether diagonals or lines they bisect each other or not, what are you going to do? Simply you are going to find their midpoints. If their midpoints are same, it means that the diagonals bisect each other. Let's suppose we have two lines. One line is AB and the other line is CD. आप लोगों ने क्या करना है? Simply आपने AB का midpoint find करना है और likewise CD का midpoint find करना है. अगर दोनों के midpoint के आंसर सेम है, it means कि ये lines एक दूसरे को bisect करती हैं. और अगर आंसर सेम नहीं है तो then they do not bisect each other. If a point lies on x-axis, its coordinates would be x, 0, and if a point lies on y-axis, its coordinates would be 0, y. So इसकी लॉजिक क्या है? आप लोगों के पास ये ओरिजिन है. ओरिजिन हमारे पास क्या होता है? इट इज 0, 0. जब आपके पास x एक्सिस है, x एक्सिस पे y थ्रू आउट 0 होता है, राइट? सो आपके पास लाइन x एक्सिस पे कहीं पे भी कट करेगी तो उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, और x कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन. पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है. लाइकवाइज हमारे पास जब y एक्सिस है, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होता है. सो कहीं पे भी लाइन कट करेगी या कोई भी पॉइंट होगा y एक्सिस पे जो कि लाई करेगा, वो पॉइंट 0, y होगा, यानी उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा और y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू इट्स पोजीशन. इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव. नेक्स्ट, पेरीमीटर. पेरीमीटर इज सम ऑफ ऑल द बाउंड्री लाइंस. एज आई टोल्ड यू बिफोर कि पेरीमीटर में आपने सिंपली बाउंड्री लाइंस को ऐड करना. अगर आपका फॉर्मूला नहीं भी आता, डजंट मैटर, किसी भी चीज का फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है पेरीमीटर के लिए, बिकॉज पेरीमीटर में हमने सिर्फ उसकी बाउंड्री लाइंस को प्लस करना है. लेट्स सपोज एक ट्राइंगल है, उस ट्राइंगल में हमारे पास जो लेंस है वो ए, बी और सी है. तो व्हेन यू हैव टू फाइंड पेरीमीटर, सिंपली यू विल ऐड ऑल द लेंस. लाइकवाइज अगर आपके पास स्क्वायर है, आपको पता है कि स्क्वायर की सारी लेंथ सेम होती है, तो इसमें जब आपको पेरीमीटर फाइंड करना है तो सिंपली यू विल फाइंड 4a, यानी यू आर गोइंग टू ऐड a 4 टाइम्स, a प्लस a प्लस a प्लस a, जो कि हमारे पास 4a बन जाएगा. इसी तरह से जो हमारे पास रेक्टेंगल है, दिस लेंथ इज a, तो दिस लेंथ विल बी ऑल्सो a, दिस इज b, दिस वुड बी ऑल्सो b. सो सिंपली यू आर गोइंग टू ऐड ऑल द लेंथ्स. तो हमारे पास 2 लेंथ्स है तो ये 2a हो जाएगा, 2 ब्रेड्स है तो हमारे पास 2b हो जाएगा. फॉर्मूला वुड बी पेरीमीटर इज इक्वल टू 2a प्लस 2b. आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. यही टोटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि इस पूरे चैप्टर में यूज हो रहे हैं. थैंक यू सो मच एवरीवन. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.